So I identify the S2 coming medial to the PSIS, and then I'm going to hit it straight anterior. In fact, I need more force there, probably. So I'm correcting the rotation. And now he becomes balanced. Let me check his hamstrings. Semitendinous, semimembranous. Biceps. Both of them combined. Just wait for 2 minutes, my friend. आपको और है? आपको है? Little. So there's no neuromuscular overactivation in his hamstring. There's something else probably which is troubling him. Probably. Let's see with him. Come down. हाथ नीचे. Yeah. So he has some innominate issues. Right. What's your name? कार्तिक जैन. अब आप एक काम करो, मुझे सबको दिखाने के लिए आसान हो जाएगा. आपका ये वाला लेग, आप सुपाइन लेटो और फेस उधर कर लो. ये वाला लेग ऐसे घूम जाओ 180 डिग्री. परफेक्ट. लेट जाओ. So we take the hamstring, which is not very tight, but you can see. Come here. So, wait. I just want to use you as a mirroring tool. Stand here, beta. Stand here. So if you see, so virtually Karthik's, you can see I'm pressing fully. Karthik, इतना क्यों हल्का press कर रहा हूँ? इतना ही press हो रहा है? His lateral malleus is reaching. What's your name? Gulak. Here. Wait, Gulak. I have other methods also. It's not that we always use needling. But one, needling is more quicker. And second, I need not to expose any part here. Otherwise, we'll prefer to do some other inhibition methods, which takes about 4 to 5 minutes. And then they need to expose that part. आ रहा है? ज्यादा नहीं आया. Painful? Yeah. So I have to do 3 or 4 different areas. Yeah. Prone. एक second prone हो जाओ. Let me first just check it and then we'll do the functional test. Prone. वही वैसे लेट जाओ. उल्टा. Prone. Oh, sorry. बच गया. तो नहीं. कौन सी साइड पे किया हमने? इस साइड पे किया ना? हाथ नीचे, गर्दन सीधी. Yeah, supine. Let's just a little bit. This is his ear. You can see an immediate change in the length of the muscle. Exactly यहाँ पे था. आपको याद है? कहाँ तक? आपके कान तक था? अब देखिए. It is crosses it. So this is what we can do with quick assessment. In this case, इससे पहले आप गुलक को मैं करता, मुझे रिजल्ट नहीं मिलते क्योंकि वहां पे न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन नहीं था. मसल वाज नॉट ओवर एक्टिव. इट माइट हैव बीन लिटिल टाइट के लिए मुझे एक सेकंड खत्म कर लो क्वेश्चन. उसके लिए मुझे मसल के फेशिया की लेंथ को इंक्रीज करना था. इसके केस में देयर इज अ ओवर एक्टिवेशन ऑफ अ मसल. मसल एक्चुअली टाइट नहीं है,
मसल के एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के पास में आ गए हैं बिकॉज ऑफ अ न्यूरल फिनोमेना. इसीलिए जब मैंने यहां पे नीडल किया, दैट वाज रिलीज्ड एंड ही बिकेम बेटर. नाउ योर क्वेश्चन प्लीज. बिल्कुल, वंडरफुल क्वेश्चन. इमीडिएट इफेक्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट. मेरे अपनी बॉडी में मैंने लेटिस्मस डॉर्साई को ऐसे ही न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन में रखा हुआ है. मैं हर हफ्ते जब वर्कशॉप पढ़ाने जाता हूं, मैं अपने उसको रिलीज कराता हूं या मसल को हल्का सा इनहिबिट कराता हूं. 2 हफ्ते बाद फिर वापस टाइट हो जाती है. ठीक है. सो दिस इज द बिगनिंग. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट. वी ऑलवेज बिलीव इन 3 थिंग्स. जैसे आपने देखा होगा, मैंने पहले इसके बोन को एडजस्ट किया. इसकी इलियम पीछे जा रही है, तो मैंने उस बोन को रिपोजिशन किया. वी कॉल इट एज एडजस्ट. जैसे मुलिगन आप करोगे तो उससे बोन एडजस्ट होगी. देन रिलीज. अब इस मसल को जो हैमस्ट्रिंग है हमने इनहिबिट किया, बट इसको ट्रेन करना पड़ेगा. ART. क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके लाइफस्टाइल में किसी ऐसे पोजीशन में जा रहे हैं जहां से मसल ओवर एक्टिव हो रही है. तो हमें ट्रेन करके उस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा. 15 इयर्स बैक जब मैंने शुरू किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं ऊंचे काउच खरीदूं, नीचे काउच खरीदूं. एक ही काउच का साइड था, ऐसे बेंड करके करता था. इतना कमर में दर्द रहता था, मतलब सॉरी व्हाट यू कॉल दैट, थोरेसिक्स एरिया, कि मैं रोज शाम को अपने क्लिनिक पे लास्ट पेशेंट होता था. मुझे कोई मैनुअल थेरेपिस्ट मिल जाता था, मैं बोलता था मुझे ट्रीट करो. करता था, 2-4 दिन आराम मिलता था, वापस आ जाता था. यहां तक कि मेरी बेटी उस समय छोटी थी, 35 किलो की थी, तो वो शाम को मेरे स्पाइन के ऊपर वॉक करती थी और मुझे अच्छा लगता था. वो 85 किलो की हो गई, 85 की थी. लकीली तब तक मैं ठीक हो गया हूं. कैसे ठीक हुआ? मैं सिर्फ इसको ट्रीट करता रहा, क्योंकि बोन ऐसे जा रही थी पीछे. स्टर्नलिस मसल, रेक्टस एब्डोमिनिस, दे वर गेटिंग ओवर एक्टिवेटेड. बार बार ये कर रहा हूं, इन्हीं को यूज कर रहा हूं. रेक्टस स्पाइन तो बेचारा स्ट्रेच से बचाने के लिए फैसिलिटेट हो रहा है. एडजस्ट किया, रिलीज किया. और आज सुबह भी जब शॉवर ले रहा था, क्योंकि अभी मैं बार बार बेंड करूंगा, उसको अनवाइंड कर दिया एंड इट्स परमानेंटली ट्रीटेड. सो अगर आप ये जो चीज करते हो, इसके बाद फॉलो अप करो. पेशेंट कम्स विद एक्यूट पेन, टच भी नहीं करने दे रहा, नीडल करके आप आराम से उसको रिलीज कर सकते ट्रापेजिस को. और अभी तो मैंने वही बोला, मेरी लिमिटेशंस हैं. मैं हर चीज ऑन स्टेज नहीं दिखा सकता. If I asked Arpit to take his pants off, वो भाग जाता. So मैंने रिलीज नहीं किया. इसके बाद I'll spend 6 sessions at least, alternate day, to make that change a little bit more permanent, and then train him that at least half of a minute to 1 minute in a day, 3 to 4 times a week वो करता रहेगा. कि हम लोग गलत काम पोजीशन में भी जा रहा है, तब भी वो बैलेंस रहेगा. So adjust, release and train. This is the principle. Any questions, please? You're open, please. Okay, you have to be a little bit more louder. Oh, I forgot to do that. I did it. I whispered it. Actually, it was that way. I didn't understand any of this, because for the trapezius you treated something in the foot. Yes. For the hamstrings you treated something in the hand. Yes. So I really don't know what you did. I didn't understand what were you doing with the leg. No, that I'll tell and you. you I'll tell you. also You won't need to understand explain quickly. me, sir. I have questions flooding in my head actually. Right. And I also didn't understand that thing One by that one, you're one by one. holding. My brain is actually a little older now. It cannot take so many things together. So I'm so see- sorry, sir. No, Actually- just wait a minute. Wait a minute. Sure, sir. See, now, can my hand go up? Why? It is Because you're pulling holding the this way. jacket. Yes. Can my hand go up now? No. No. But now it can go up. Even though this release is not done here, this is facilitating it go up. So, this is all derived from the first ever manual therapist in the history of world. His name was A.T. Still. 1875, 85, he developed something called osteopathy. Osteo, the cause of pathology,
And he said one wonderful thing. From head to toe, fascia is one. And to consult, to start the assessment and treatment, all you need is fascia. People thought fascia is a vestigial organ, throw it out. No. If you apply a tape here, it changes the tone in your muscle, canister tape. You're applying on the fascia. So, what I did, I'm evaluating certain tests. I'm stroking certain directions if I failed it. So that helps me decide which fascia side is overactive. There are many such things. Inhibited. It is tight. It is broken. Even if somebody has an MCL tear, you bring an MRI, I challenge. Right now, I challenge. You bring an MRI, he has an MCL tear. Don't let me know. I'll let you know whether he has an MCL or not. So please teach us that. Sorry? Please teach us that. Better, I would love to teach whatever possible in this limited time, but, sorry? Evaluation, yes. So the first thing what I did was, when he presented me, he has a functional leg length testing. So there are two kinds of leg length faults that we have. One is called as anatomical. Right? So let me choose another person, let me show you. If the camera, can I request the camera person to be here for a second? The videographer. The one who is doing videography. अभी आप मॉडल नहीं बने ना? आप जूता पहनो. हैं? आपका जॉब खत्म है. Thank you. Thank you. Thank you, my friend. That was good to have you. Sir, can I request you here, videographer? कोई ये कैमरा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, मुझे दिखाना है कुछ. हाँ जी? It can be come here, brought here. नहीं होगा, ऊपर से दिखाना है, बर्ड आई व्यू. लेटो उल्टा लेटो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बेटा उठो जरा. उठ जाओ. बैठो एक मिनट. मेरी हेल्प करो, इसको उधर लेके चलेंगे. नो प्रॉब्लम. इसको उठाओ वहां से टेबल को. बस हो इतना ठीक है. बस. See, Brian Mulligan, courtesy Deepak sir, I met him in 2004, and he said one wonderful thing. He said, New Zealand is a small country. Australia is population-wise very small country. But if you see New Zealand, Australia, Mackenzie, Maitland, Mulligan, Butler, all coming from there. And he said India is such a large country, no techniques. So these techniques of evaluation was God's gift to me. I was treating one patient, he's a colonel in army, and his gluteus was inhibited. I was trying something, I'm not getting things. I was doing some osteopathic technique, and then I realized stroking the muscle in certain direction changes his functional leg length. I thought it's just a coincidence. So we took 300 patient samples. With EMG, we found that their muscles were overactive, inhibited, or what they had. And then we did the same stroke, and we found it to be very, very valid. Reliable is, you do, and I do is the same. Valid is, it was having a very high cross validity with the EMG. So this is how it was discovered. And then
I wanted to call it myokinetics, my own kinetics. So, as I said before, I developed in 2013. I was hesitant. I first patented it, went to Singapore, got it published to Elsevier. This year, we went to Tokyo. We presented these needling techniques, whether they change or not. So these needling techniques are not part of that system. Evaluation was that. So I'll show you what I did right now. Front. सर ऐसे ऊपर आएगा इसके हाँ ऐसे कर देंगे अरे कुछ नहीं बस 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 मेरे को थोड़ा खड़े होने के लिए चाहिए अदरवाइज पता लगा मैं नीचे चला गया नहीं फिर मुझे पीपी सर की हेल्प लेनी पड़ेगी अपने आप को ठीक कराने के लिए सर इसके ऊपर चाहिए मुझे आप लेटो आपका काम खत्म हो गया आप लेटो इसको इधर ले आओ इस पे लाइए ऊपर हाँ इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर सर पास ऐसे लाना पड़ेगा बिल्कुल ऊपर ऐसे एंगल से इस एंगल से right so if you see beta you can see now you can see his right leg is short I am not able this is his right leg see this is more superior this leg is longer clear so right leg is short does he have a functional shortening or anatomical shortening sit long sitting if my certain tests would have not changed it I would long sitting if you see now both the legs are equal that means when we have cut off from here he does not have an anatomical shortening he has functional कहीं दर्द रहता है कहाँ पे रहता है उल्टा लेटो so his right leg is short I check for certain things no change so he has a little rotated vertebra right here दबाने से दर्द आ रहा है rather than he telling me where his exact tenderness is I'm asking क्या यहाँ पे भी पेन है यहाँ पे और यहाँ पे so we find that with leg length we'll adjust that और एक बार एडजस्ट हो जाएगा दोनों टांगे बराबर आ जाएंगे टेम्परेरी में दिखाता हूँ आपको It's in my pocket only. Little. अब आप देखोगे ऊपर से अब इसकी दोनों टांगे बराबर आ गई अब now I'm not doing any magic I'm just evaluating now he had a spinous process rotated to the left we call it SPL in our language so it's left rotation of the spinous process I tested and find it by touch right so there must be something which may be overactive and tight here can I a little bit right so one could be I'm taking the low fibers of the QL or iliolumbar ligament which is there no it doesn't change let me check the rotatory component no so probably the sacrum may be creating an effect here so let me check the sacrum here and now the leg becomes short so
When I am trying to take anything in dysfunction, his leg again pulls up, as I said. आपको डर लगता है आप कैसे जाते हो? इसी पोजीशन में जाते हो? So it goes not only like this, but it pulls a little like this, very little. I cannot measure both the legs going up and down, but I can measure the leg going little up and down when I take it into dysfunction. And when you release this dysfunction, his legs becomes equal again. From there I can evaluate whether a muscle or a bone is in dysfunction or not. So let me check his erector spinae. Let's check his erector spinae. So I am stroking the muscle from insertion to origin. There's no change. Let me check his QL, ilio-lumbar fibers. No change. This is how I can find out whether muscle is involved or not. You getting my point? A little difficult to understand. It's like AI. We can't understand how it is being done, but we are all getting a benefit out of it. Right? Any other question? Treatment. Yeah, this is facial what thing? Oh, this is called as a bone adjuster. Bone adjuster. We can manipulate also. We can do MWM also. We get wonderful results. Most of my researchers, we have published a data where we changed the resting heart rate, finding the dysfunction by this evaluative method, and treating with MWMs. Because my UG and PG students, who are my bulk data collectors, PhD students are not in my control much. They'll do something on their own. But UG and PG are under my control, total control. I do not want them to manipulate. So I teach them MWM, and I even don't allow them to use this instrument. So we evaluate by this way. We can use MWM, we can use MET. It also gives wonderful results. We can readjust the bone back into position by MET. Mulligan, adjuster, manipulation, anything. Once we do it, the patient's pain become better. Right? Any other question? Yes. Functional leg length? Right. Okay, there are two ways. I can go with my hands, reach the medial malleus. Right. In this case, so I can use the shoes on. Of course, in Odisha it will be difficult for people wearing the shoes. Even in our areas, they'll come with spoiled shoes. So we keep Crocs. Duplicate Crocs आते हैं 200-250 रुपए के, उनको सैनिटाइज करके पेशेंट को पहना देते हैं. अब यहाँ पे देखिए, आपको शायद अगर ऊपर से दिखेगा सर, इधर फोकस कीजिए, इस पे. अब मैंने इनके वेल्गस नहीं, आप मेरे पर फोकस कर रहे हैं, इस पे. हाँ, अगर आप देखें, इसका यहाँ पे इनका वेरस है. अगर इस साइड से वेरस होगा तो ये लेग ऐसे चल जाएगी, ऐसे होगा तो ऐसे चल जाएगी. तो मैंने इनके जो कैल्केनियम जो है वो काफ के लाइन में ले आया हूँ, इधर से कैल्केनियम काफ के लाइन में ले आया हूँ, और क्योंकि मैंने अभी इनको एडजस्ट किया है, दोनों टांगे बराबर आ गई हैं. यही चीज आप बिना जूते के मीडियल मेलस को टच करके भी लोअर मोस्ट पार्ट को भी कर सकते हैं. इट इज योर चॉइस. तो इस तरह से हम फंक्शनल लेग चेक करते हैं, कौन सी छोटी है कौन सी लंबी है. Can you please demonstrate how to check from the medial malleolus? Sure. देखो एडवांटेज ऑफ बीइंग अ मॉडल, कोई वाइफ भी नहीं अपने हस्बैंड के लिए नहीं करती. जूते खोलने पर खोल रहा हूँ, सॉक्स खोल रहा हूँ, आराम से लेटा है. Jokes apart. So if you can see, I'm taking from the navicular bone my both the fingers, middle fingers, and I'll try to keep them parallel. I'll track them parallel. Even if one goes forward, they have a speed breaker from where I have to stop. So I take it from here, take it from here, take it from here, and now if I see from the lower end of the malleolus, which you cannot show on the camera, with one of my eyes, both are equal now because we adjusted him. So they're this way. If you have referred David Mackey, they do it in supine. You go and refer Maggie, they do it in supine, not in prone. But I was taught in prone, so we're following prone position.
और शायद हिंदुस्तान में हम लोगों से पैसा इसलिए ज़्यादा नहीं ले पाते क्योंकि हम सब कुछ सुपाइन में करते रह जाते हैं और पेशेंट की जो पर्स है वो पीछे रह जाता है। फॉरेनर्स ने इसको प्रोन में इसलिए डेवलप किया बिकॉज मनी हैज टू कम फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर। जस्ट अ जोक। And second question is how to stroke. That is from the origin to insertion or the insertion to origin. So there are many things. We stroke from origin to insertion, O to I. That means for if a muscle is inhibited, we'll stroke from origin to insertion, O to I, inhibition. If muscle is inhibited, I'll make it more inhibited by stroking from origin to insertion. I to O, insertion to origin. If the muscle is overactive, I'll stroke from insertion to origin. There are other strokes also to find out whether there's tear, there's an adhesion. किसी को स्कार है, मैं बिना एग्जैक्टली अब मुझे ये तो पता होना चाहिए स्कार है, अदरवाइज नहीं भी पता होगा मैं ढूंढ सकता हूँ स्कार कहाँ है। मैंने बोला ना, आप किसी को MCL TRF का MRI लेके आओ, मैं आपको बिना MRI ढूंढ के आपको बता दूंगा उसको MCL TRF है कि नहीं है, ATFL TR है कि नहीं है, किसी से। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, टाइम लगेगा सीखने में। एक फूड फॉर थॉट है। देखो कभी भी कॉन्फ्रेंसेस में, मैंने भी आपकी तरह एक वर्कशॉप अटेंड की थी छोटी सी, मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिली, कुछ अपने आप डेवलप किया। इट्स अ जर्नी विच हैज टेकन इयर्स टुगेदर। जब मैं नितार में फर्स्ट डे आया था तो मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा तुझे बाइसेप्स ट्राइसेप्स मालूम है? उस जमाने वो भी नहीं मालूम था, आज सब मालूम है। तो धीरे धीरे सीखेंगे, होगा। मैंने सर को, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन यहां बैठे और सब शायद इन्हीं के लिए आए हैं, ये फैक्ट है। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस इतने बड़े अच्छे स्केल पे सब सर के कारण आए। आप सर को देखते हो कैसे काम करते हैं। ढूंढ के लगातार करते रहते हैं। तो बेटा ये कोई भी मैनुअल थेरेपी 2 दिन में नहीं आएगी, एक तपस्या है। तो धीरे धीरे आप एक रास्ता ढूंढो, उस पर काम करते रहो, सब चीजें आने लग जाएंगी। आज से 25 साल पहले जब मैं निकला, मैं तो खैर बहुत लेट निकला, सबको पता है, मैं तो एग्जाम भी नहीं दे पाता था और सर को, मैम को लगता था मुझे डर है, मेरे को हेमेचूरिया होता था, 36 पथरियां निकली मेरे किडनी में एक के बाद एक। मुझे तो लगा था मैं जिंदा ही नहीं रहना, मैं क्या करूंगा फिजियोथेरेपी करके। तो मैं जस्ट जबरदस्ती फिजियोथेरेपी की कि और अल्टरनेटिव नहीं था। और इसलिए नहीं कि मैं नहीं करना चाहता था, मुझे ये डर हो गया था एक के बाद एक एक पथरी निकल रही है, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। और पूरा ब्लड रेड यूरिन जो निकला किया, इंस्पिरेशन इन लोगों से ली। नीपी सर, पीपी सर, सच बोल रहा हूं, सब है। मोनालिसा मैम बहुत, मोना मैम बहुत, मतलब मेरे लिए मदरली फिगर रही हैं। सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, चित्तो सर, नंदा सर, सब। बट पीपी सर से एक चीज डीपी सर से सीखी, डट जाना। अगर आप डटोगे, ये सब चीजें मैजिक नहीं है, ये सब पॉसिबल है। श्रद्धा से सीखो, धीरे धीरे सब आएगा। एंड ये चीजें डिस्कवर करनी पड़ेंगी, इट विल टेक इयर्स। मैं वो लड़का था जो डरता था पेशेंट के सामने, अपने कॉलेज के बच्चों को नहीं जाने देता, मुझे डर लगता था। बच्चा पूछेगा सर ये क्या कर रहे हो, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। अब भगवान की किस्मत थी, नेपलीज प्राइम मिनिस्टर हैज कम टू मी फ्रॉम नेपाल फॉर हिज ट्रीटमेंट। मेरे पास फोटो है फेसबुक पे, वो लास्ट टाइम मैंने फेसबुक पे फोटो डाली है। ये भगवान की कृपा है, इन लोगों का आशीर्वाद है। और ये सब चीजें सिर्फ एक डायरेक्शन पकड़ो, सर ने सीट वो दिया है, उसको पेड़ बनाना आप सबके हाथ में, ठीक है। और कुछ इससे पर्टेनिंग है, फॉरगेट अबाउट मैजिक समथिंग, इससे कुछ क्वेश्चन पर्टेनिंग है, प्लीज आस्क मी। Dr. Manish, I am Dr. Manish Vikenanda, sir. सर नमस्कार। I have a question for you. सर Have you? It's not a question actually. आप छोड़ दो क्वेश्चन पूछना। It's not a question actually. Sir. I want to know. सर ने बहुत क्वेश्चन पूछे और सर के क्वेश्चन से डर के तो मैं पर्दे के पीछे छुप जाता था। It's not a question actually. Sir, sir, sir. I want to know whether this technique works on spastic patients like a CP child who is walking with a crouch gait. Suppose we want to facilitate the quadricep by inhibiting hamstring. Can we apply this technique to spastic patients? Can you enlighten on this? सर एक नेतार में भी आपको पता है मैं तो स्पास्टिक पेशेंट कभी देखा ही नहीं, मैं तो डरता था।
ठीक है, चित्तो सर से वैसे बहुत प्यार था, चित्तो सर के साथ चेस भी बहुत खेला, लेकिन जब वो सीपी को ट्रीट करते थे मुझे समझ ही नहीं आता था सर क्या कर रहे हैं, तो वो सर का डोमेन था। तो सर मेरे साथ अब प्रॉब्लम क्या है, पिछले 20 साल से ना मैंने कोई हेमीप्लेजिक ना कोई स्पास्टिक कोई भी ऐसी चीज सीपी कोई नहीं देख रहा सर मैं, तो मैं गलत आंसर दूंगा जब मैं किसी चीज को ट्रीट कर नहीं रहा कि काम करता है नहीं करता सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में सर मेरे पास सर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्वाइट एविडेंट है। ज्योति बैठा है सर यहाँ पे, ये बैठे हैं, इन्होंने सर ये टेक्निक सीखी, इनको प्रैक्टिस करें, ये बता सकते हैं कि वाकई बहुत क्विक एंड अच्छे रिजल्ट्स इससे आते हैं सर। बट स्पास्टिसिटी सर मैं पेशेंट ही नहीं देख रहा सर, ये प्रॉब्लम है सर। But I think when the spasticity is dominated by non-neural components, this should work. Because what you showed is a miracle I observed. Yes, sir. So I think we should work on it also. Yes sir, you're right sir, absolutely. But unfortunately, because I never practiced, so maybe sir, आप लोग करके you may give us the light on that, but I'm not even not confident of evaluating a CP or a HAMI now. Thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you PP sir. Thank you ma'am. Thank you Tito sir and Nanda sir. It's all a blessing from all of you that I could come here and feel privileged. अच्छा आपका कोई क्वेश्चन है? Sir, how to check overactive or inhibited muscles? बेटे जब हम किसी भी मसल को जब फंक्शन लाइक बराबर आ जाती है, if I stroke from origin to insertion and the muscle causes a change in the functional length, the muscle is inhibited. If I stroke from insertion to origin and the muscle becomes creates a functional length change, it is overactive. Okay. Then what will be the treatment? Treatment is different. For overactive muscles, I showed you needling today. In my clinic, I sometimes don't, most of the times I don't do needling. Why? Many people are scared of needling. So we use a lot of active releases. We use inhibition techniques. We use something called as HTP techniques from fascial distortion. So we have various techniques to inhibit the muscle tone. The purpose is, where there is a neuromuscular facilitation, the things have come together, it is overactive, we inhibit it. For inhibited muscle, we activate. We have certain lymphatic channels. There's a wonderful work by Spencer. He found if you inject 10 to 15 ml saline in the knee, VMO gets inhibited. 50 to 60 ml of fluid is required to inhibit rectus femoris. So he showed whenever there will be collection of fluid in the intramuscular fascicles, the muscle will be inhibited. It will not work. So we use certain neurolymphatic techniques to activate the muscle. The time is short, otherwise I would have shown, I have first evaluated, many people must have gluteus maximus inhibited or gluteus medius inhibited, especially the women because of the lifestyle. And we spend about 5 to 6 minutes in activating through this neuromuscular activation zones. And immediately the muscle becomes activated. But again, you have to keep on using that muscle. You have to train the person. If he stops using it, it will be only a temporary thing. What Richardson and Gell said, people with back pain, 97% of them have inhibited rectus abdominis and, transverse abdominis and multifidus. People with no back pain, 100% of them can activate them. So any injury, any dysfunction will inhibit them. So you have to do the neurolymphatic technique, get the fluid out, and then keep on moving that part. Right? Yeah, your question. But at that point you have to do by learning. No, one request, sir. Just one second. Ladies should be first. And when the lady is asking question, don't dare to ask any questions anywhere. Sorry. ये आदत ढाल लो, कल को शादी हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी. अच्छा, उड़ीसा के लोग हंसते नहीं. ठीक है. हाँ जी बोलो. Which point we have to treat? How we will know that? Like for trapezius, we did it. But this is, I picked up these points from osteopathic literature. Right? So there are specific points specifically for every individual muscle different. And I said, this is not one technique we use.
We have variety of techniques. We do specific releases, we use activation zones, we even use certain, एक neuromuscular stimulation भी हम लोग इसमें कई बार employ करते हैं, but not on the area where you have. Right? Thank you, sir. Right. Shall I say thank you to everybody? Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for the comprehensive and enlightening presentation on myokinetics. Your explanation of interrelationship between muscle chain and fascial continuity, along with the structured approach to clinical diagnosis in fascial dysfunction,